7.5 hours long that had started at 7:42 in the morning on Sunday. During the countdown, the launch vehicle systems, liquid propellant storage and servicing systems at the launch complex, and the range instrumentation systems carry out final preparation activities leading to the launch. And you have a little while ago watched the mission director Shri N.P. Giri authorizing the start of automatic launch sequence. It is basically a capsule of very critical functions of the launch vehicle stages and satellites run and monitored by ground-based computers. If all the parameters are found acceptable, the onboard computer takes over and very soon thereafter the actual launch takes place. -17 minutes. सभी वैज्ञानिक अभियंतागण अपने कार्य कुशलतापूर्वक पूर्ण करके इस मिशन के लिए आतुरता से इंतजार कर रहे हैं। कुछ अंतिम गतिविधियां तथा जांच बाकी हैं। अभी अभी हमने देखा मिशन डायरेक्टर ने ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस शुरू करने का अनुमोदन दे दिया है। ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस शुरू करने के पश्चात पूर्ण नियंत्रण ऑनबोर्ड कंप्यूटर के पास चला जाता है। रॉकेट के पास खुद का ऑनबोर्ड कंप्यूटर है, वह पूरे जांच -16 minutes. पूर्ण रूप से सुनिश्चित करता है और तत्पश्चात कोर स्टेज के प्रज्वलन का कमांड लेगा। LSC Roger. These servers activated. MC confirms data from SHAR 1 and SHAR 2. Automatic launch sequence initiated for GSLV-F12 launch. ALS in auto mode. आप सभी दर्शकों के लिए अब प्रस्तुत है इस लॉन्च व्हीकल GSLV Mark II GSLV F12 का संक्षिप्त इंटीग्रेशन वीडियो। -15 minutes. प्रथम चरण जो कि ठोस नोदक पर आधारित चरण है, इसका यह नोजल एंड सेगमेंट कोर बेस श्राउड के साथ यहाँ SVAB सेकेंडरी व्हीकल असेंबली बिल्डिंग पर लाया गया है। तत्पश्चात ऊपर की ओर मिडिल सेगमेंट बहुत ही सावधानी पूर्वक, सतर्कता पूर्वक, धैर्य पूर्वक ये कार्य किया जाता है। इसमें कोई भी त्रुटि की कोई गुंजाइश नहीं होती है। कोर स्टेज में 3 मिडिल सेगमेंट्स होते हैं तथा अंत में ऊपर की ओर यह हेड एंड सेगमेंट लगाया जा रहा है। यह पूरा कार्य SSAB बिल्डिंग पर किया जा रहा है। अब ये देख रहे हैं आप इग्नाइटर। यह इंटर स्टेज है जिसे अब समायोजित कर दिया गया है प्रथम चरण पर। अब आप देख रहे हैं यह L40 स्टेज है जो कि तरल नोदक पर आधारित चरण है। इसमें विकास इंजन लगा हुआ है। UH-25 तथा N2O4 पर आधारित यह चरण। ऐसे 4 स्ट्रेप-ऑन बूस्टर्स कोर बूस्टर S139 के साथ में संलग्न किए जा रहे हैं।
अब यह प्रथम चरण पूर्णतः तैयार हो चुका है तथा इसे SSAB बिल्डिंग से निकालकर VAB तक लाया गया। The second stage, GL40HT, having prepared in a separate facility, is being moved to the vehicle assembly building for integration about the first stage. That is the cryogenic upper stage. Entering into the vehicle assembly building, carefully being tilted and being integrated above the second stage. The equipment bay for the compatibility checks, and there are the visuals from the clean room for the satellite preparation. Minus 12 minutes. This is the concept of encapsulated assembly, where the satellite is being ensconced into the heat shield house into the clean room facility, which is a separate facility, and then as an integral unit it will be moved to the vehicle assembly building and then integrated to the launch vehicle. Completed. This is a 4-meter diameter ogive payload fairing, and this is the second time a similar payload fairing and the similar design is going to fly. उपग्रह को ऊष्मा कवच के अंदर सुरक्षित कर दिया गया है और अब पूर्णतः तैयार GSLV-F12 को व्हीकल असेंबली बिल्डिंग से उम्बिलिकल टावर लाया जा रहा है। The second launch pad is based on the concept of integrate transfer launch. जी हाँ, यह नजारा GSLV-F12 का है जो कि पूर्णतः तैयार है अपने मिशन को पूरा करने के लिए। यह द्वितीय प्रमोचन मंच है। Views from the mission control center on your screens now. ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस जारी है तथा अंतिम जांच के पश्चात प्रज्वलन का कमांड इशू किया जाएगा। अब हम प्रज्वलन से 10 मिनट 13 सेकंड की दूरी पर हैं। Minus 10 minutes. Health of cryomhydraulic system is normal and cyclic charging is in progress. GS2 redundancy and actuation. अभी आपने इंटीग्रेशन वीडियो देखा, हम उसको और थोड़ा वर्णन करते हैं। GSLV-F12 एक त्रिचरणीय यान है। प्रथम चरण में ठोस नोदक वाला S139 बूस्टर के साथ 4 L40 जो कि तरल नोदक पर आधारित स्ट्रेपॉन्स हैं, वह संयुक्त रूप से GSLV के प्रथम चरण कहलाते हैं। कोर बूस्टर लगभग 4800 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करता है, वहीं 4 L40 स्ट्रेपॉन बूस्टर्स विकास इंजन के साथ 2720 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करते हैं। L40 के विकास इंजन में इलेक्ट्रोडायनामिक एक्चुएटर्स लगे होते हैं जिससे यान को पिच, याव तथा रोल नियंत्रण प्रदान किया जाता है। द्वितीय चरण में फिर से तरल नोदक पर आधारित चरण है। DS2 prime chain actuation in progress. UH-25 तथा N2O4 ईंधन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। यह दाब भारित उच्च प्रणोद वाले विकास इंजन लगभग 846 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करते हैं। इसमें भी इंजन जिम्बल के लिए इलेक्ट्रोडायनामिक एक्चुएटर्स लगे हुए हैं। इस चरण को GL40HT भी कहा जाता है क्योंकि इसमें हाई थ्रस्ट विकास इंजन्स लगे हुए हैं। इस चरण का प्रज्वलन काल 141 सेकंड का होता है। ऊपर की ओर चलते
हुए तृतीय चरण जो कि क्रायो इंजन से संयुक्त है। prime chain actuation completed. All actuations are completed. क्रायो इंजन पूर्णतः स्वदेशी क्रायो इंजन लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर द्वारा वीएसएससी तथा आईपीआरसी के सहयोग से विकसित किया गया है। वर्तमान में जीएसएलवी में क्रायो इंजन के उन्नत वर्जन C15 का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस चरण में लिक्विड ऑक्सीजन तथा लिक्विड हाइड्रोजन का ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है और इसमें कुल 74 किलोन्यूटन का प्रणोद उत्पन्न होता है। इस चरण का कार्यकाल लगभग 841 सेकंड का होता है। यही वह अंतिम चरण है जो उपग्रह को उद्दिष्ट कक्षा की ओर ले जाता है तथा अंतःक्षेपित करता है। बहुत से गणमान्य व्यक्ति यहां उपस्थित हैं। On your TV screens, the dignitaries getting ready for witnessing the launch event of GSLV-F12 NVS-01 mission. Ahead of the launch, let me inform the viewers the flight events that are going to take place during the mission. The total duration of mission is about 18 minutes. The L40 ignition takes place 4.8 seconds ahead of T0. After ascertaining the health of L40 strap-on engines, the ignition of core S139 motor takes place. The S139 stage, based on HTPB-based solid propellant, burns for 110 seconds and burns out at an altitude of 41 kilometers. In the meantime, the rocket gains a relative velocity of 1.5 kilometers per second. The four strap-ons, called the L40, operating on Earth-storable liquid propellant-based Vikas engine, burn for about 150 seconds. The ignition of second stage, called the GS2, takes place soon after the shut-off of L40s. The separation of GS1 takes place 2 seconds after the ignition of GS2. This is called hot separation, in which the upper stage exhaust imparts thrust over the spent lower stage to ensure impact-free separation event. By now, the rocket will be at 75 kilometers altitude. The closed-loop guidance is initiated, indicating that the rocket no longer needs to steer itself for a better journey through the atmosphere. 237 seconds past the launch time, the heat shield separation takes place when the rocket is at an altitude of 115 kilometers. By the time the second stage completes its operation of 142 seconds, the rocket gains a relative velocity of 4.7 kilometers per second. The second stage, GS2, is separated few seconds later. Cryogenic upper stage, CUS-15, is the third stage based on liquid hydrogen and liquid oxygen stored at cryogenic temperatures as propellants. This stage operates for 13.5 minutes and increases the relative velocity of the rocket from 4.7 kilometers per second to 9.7 kilometers per second. The satellite NVS-01 is injected at an altitude of 251.5 kilometers with a relative velocity of 9.7 kilometers per second. Let me remind the viewers that the geosynchronous transfer orbit of NVS-01 has a perigee of 170 kilometers, which is how far the satellite will be at a point nearest to the Earth, and apogee, or the farthest point from Earth, of 36,744 kilometers nominally. Thrust burns of the satellite will then take it to the geostationary orbit.
Pyro and wall battery on. Onboard अब computer हम in प्रमोशन flight के mode. पास आ चुके हैं। अब प्रमोशन 3 मिनट 24 सेकंड की दूरी पर है। इस मिशन के मुख्य उपग्रह NVS-01 जिसका कुल भार 2232 kg है और इस श्रेणी में यह L5 तथा S बैंड के Minus अलावा 3 L1 minutes. फ्रीक्वेंसी बैंड का उपयोग अतिरिक्त सेवाएं प्रदान करने के लिए कर रहा है। Final charging of cryomagnetic system is completed. इस उपग्रह में Cryom system सबसे is normal. महत्वपूर्ण पेलोड है रुबिडियम परमाणविक आवृत्ति मानक घड़ी। परमाणविक घड़ी एक स्थिर आवृत्ति मानक प्रदान करता है जो कि सभी नेविगेशन पेलोड के लिए एक निर्देश का काम करेगा। NVS-01 उपग्रह यह प्रयोग कर अपनी परिशुद्ध नौवहन सुविधाएं को उन्नत बनाते हुए भारत के विकास के लिए समर्पित है। We are about 2.5 minutes from the launch time. The network of ISRO telemetry tracking and command network stations view the launch vehicle along its trajectory. The trajectory parameters and separation events are ascertained through these stations. For the present mission, SHAR, Port Blair, Brunei and Beak stations are participating. minus 2 minutes. सभी दर्शक दीर्घा बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हुए प्रमोशन का। मौसम प्रमोशन के लिए पूरी तरह अनुकूल है। Bright sunny morning here at Sriharikota. सर्वप्रथम हम देखेंगे T-4.8 सेकेंड्स पर चारों L40 इंजन का इग्निशन। तत्पश्चात T0 पर कोर बूस्टर का प्रज्वलन होगा और उसके बाद यान का उत्थापन। There's a little over 1 minute from the launch. Boat tank ready. minus 1 minute. All sub sound. minus 55 seconds. L40 VHPP opened. minus 50 seconds. Throttle ready. All sequences sound. minus 45 seconds. Tank ready. Cryo stage ready. minus 40 seconds. GS2 40 seconds VHPP to go. opened. Stand by for Yes, the ready. launch. minus 35 seconds. minus 30 seconds. L40 Real-time VHPP programs opened. activated. minus 25 seconds. GS2 VSPP opened. minus 20 seconds. minus 15. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off. Normal. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन GSLV-F12 का P3 tracking. P2 tracking. चारों L40s तथा कोर बूस्टर S139 अपना सामान्य निष्पादन करते हुए उद्देश्य कक्षा की ओर अग्रसर। Performance normal. Nominal launch of the GSLV-F12 mission. The rocket flying by spewing fire into the clear sky of Sriharikota. GS1 and L40s together thrusting currently. The SHAR ground station is currently tracking. SHAR 1 main auto. Plus 1 SHAR 2 minute. is in main auto.
वर्तमान में प्रथम चरण प्रज्वलित है। इसका कार्यकाल लगभग 110 सेकंड का होगा। इसमें ₹4,800 किलोन्यूटन का प्रणोद उत्पन्न होता है। P2 change over to SCBT2. The core 139 motor will continue to burn for 110 seconds, while the L40s continue to burn First for a stage total of performance 150 normal. seconds. Thrust developed by the GS1 S139 motor is 4,815 kilonewtons, while each of the L40s develops 762.5 kilonewtons. Stage ban out. प्रथम चरण को कट ऑफ कर दिया गया है। Plus 2 L40 minutes. अभी भी प्रज्वलित हैं। This is a confirmation for the S139 burnout. L40s still developing thrust. कुछ ही क्षणों में हम देखेंगे द्वितीय चरण का प्रज्वलन तथा प्रथम चरण का पृथक्कन। Altitude is 67 kilometers. 40 stages thrust cut off. Stage separated. Second stage ignited. जी हाँ, द्वितीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है जैसा निर्धारित था, और प्रथम चरण को यान से पृथक कर दिया गया है। The second stage has ignited and the first stage has been separated from the ongoing launch vehicle. Currently, SHAR station is tracking. Plus 3 minutes. जी हाँ, यान पूर्णतः निर्धारित पथ Stage को performance अनुकरण करता normal. हुआ जा रहा है और द्वितीय चरण भी सामान्य निष्पादन कर रहा है। इस चरण का कुल कार्यकाल लगभग 140 सेकंड का होगा। इस दौरान यह 846 किलोन्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर यान को करीब 130 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाएगा। High thrust Vikas engine developing a nominal vacuum thrust of 846 kilonewtons. Vikas engine is a pump-fed engine Second stage performance normal. of UH25 as fuel and N2O4 as oxidizer. Plus 4 minutes. Load fairing separated. चूंकि यान घने वातावरण से बाहर जा चुका है, इसलिए ऊष्मा कवच की आवश्यकता नहीं रह गई है और इसलिए इसे यान से पृथक कर दिया गया है। Two major flight events have taken place in recent past. The initiation of closed loop guidance and the separation of payload fairing. Performance normal. Currently, the vehicle is going as per the predicted trajectory. SHAR and Port Blair stations currently Stage is tracking. authorized. द्वितीय चरण सामान्य निष्पादन करते हुए यान को उद्देश्य कक्षा की ओर ले जाता हुआ। Second stage thrust cut off. Second stage Plus separate. 5 minutes. Thrust ignition is commanded. द्वितीय चरण को कट ऑफ के बाद में यान से पृथक कर दिया Ignition गया is है। confirmed.
और अंतिम चरण क्रायो अपर स्टेज का प्रज्वलन शुरू हो चुका है. The cryogenic upper stage has commenced its operation. The nominal burn duration for cryo stage is more than 13 minutes. Nominal thrust of the cryogenic upper stage is 73.97 kilonewtons, while the operated thrust is 83.34 kilonewtons. The cryogenic propellants have a specific impulse of 453.5 seconds. तृतीय चरण, जिसे हम क्रायो अपर स्टेज के नाम से जानते हैं, यह बहुत ही जटिल इंजन होता है, इसलिए यहाँ काफी तालियों के साथ गड़गड़ाहट हम सुन सकते हैं जब तृतीय चरण का प्रज्वलन शुरू हुआ. कोई भी त्रुटि की कोई गुंजाइश नहीं होती है अंतरिक्ष मिशन में. जैसा कि आपको बताया गया, यह मिशन पूर्वी दिशा का मिशन है, इसलिए हमारे ग्राउंड स्टेशन शार तथा पोर्ट ब्लेयर स्थित भू स्टेशन इसे ट्रैक कर रहे हैं. तृतीय चरण का निष्पादन सामान्य और यान अपनी उद्देश्य कक्षा की ओर बढ़ता हुआ जा रहा है. अब हम प्रमोचन से 405 सेकंड की दूरी पर आ चुके हैं. ऊंचाई 145 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 5 किलोमीटर प्रति सेकंड. We are more than 400 seconds past the launch time. Current altitude of the launch vehicle is 146 kilometers and the relative velocity 5.14 kilometers per second. Let me describe to the viewers in the meantime the description of the satellite taking ride in this mission. Navigation services using Indian constellation of satellites provides accurate real-time positioning and timing services over India. Cryo stage performance and normal. 1500 kilometers around India. The Indian Regional Navigation Satellite System, IRNSS, goes by an operational name Navik. The launch of IRNSS-1A took place in July 2013, and with the launch of IRNSS-1I in April 2018, the constellation of Navik with first generation of satellites, that is 3 in geostationary and 4 in geosynchronous orbit, was complete. The present satellite, NVS-01, is the first in the second generation navigation satellite series, which will ensure continuity of legacy Navik services. The satellite has navigation and ranging payloads. The navigation payload operates in L1, L5 and S bands and employs a tri-band antenna. The heart of the navigation payload is the rubidium atomic frequency standard RAFS, the atomic clock which acts as a stable frequency reference for the navigation payload. This clock is indigenously developed by the Space Application Center of ISRO at Ahmedabad. The RAFS is one thing that distinguishes second generation of navigation satellites from the first. The other noteworthy feature is the inclusion of L1 navigation band, which is popular for providing PNT, that is precision, navigation and timing services for users and for interoperability with other GNSS signals. The ranging payload consists of C/C transponder used for two-way CDMA ranging to facilitate precise orbit determination. Navik is significant for India in the application of navigation in terrestrial, aerial and maritime areas, geodetic surveying, fleet management and marine fisheries.
Apart from these, NAVIC is useful in providing location-based services in mobile devices. Plus Timing 10 minutes. services are provided to the agencies for which accurate time is of utmost importance, like financial institutions, power grids, and such. The other applications include Cryostage Internet of Things, performance normal. strategic and emergency services. तृतीय चरण, क्रायोजेनिक इंजन के सभी तंत्र सामान्य रूप से कार्य कर रहे हैं। इस चरण का कुल कार्यकाल लगभग 840 सेकंड का होगा। यह वह अंतिम चरण है जो उपग्रह को उचित कक्षा में पहुंचाकर अंतःक्षेपित करेगा। इस दौरान आपको इस उपग्रह से जुड़ी कुछ जानकारियां उपलब्ध कराते हैं। देश के नौवहन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसरो द्वारा नाविक नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन की स्थापना की गई। नाविक को इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNS के नाम से भी जाना जाता है। नाविक को 7 उपग्रहों के नक्षत्र के साथ डिजाइन किया गया है। इस नक्षत्र के 3 उपग्रह भूस्थैतिक कक्षा में रहते हैं तथा अन्य 4 उपग्रह भूमध्य रेखा से 29 डिग्री के झुकाव के साथ भूतुल्य काली कक्षा में रखे गए हैं। नाविक 2 सेवाएं प्रदान करता है, नागरिक उपयोगकर्ताओं के लिए तथा प्रतिबंधित सेवाओं के लिए। इन दोनों सेवाओं में L5 और S बैंड का उपयोग किया जाता है। नौवहन के कवरेज में भारत और उसके सीमाओं से लगे 1500 किलोमीटर के क्षेत्र में यह सुविधाएं प्रदान करने में सक्षम होगा। इसमें नौवहन सिग्नल 20 मीटर के विभेदन क्षमता और 50 नैनोसेकंड से अधिक की समय परिशुद्धता के लिए डिजाइन किया गया है। NVS-1 L1 बैंड पर अपनी अतिरिक्त सेवाएं प्रदान करने के लिए भी डिजाइन किया गया है। नाविक के अन्य अनुप्रयोगों में है भौमिक, आकाशीय तथा समुद्री नौवहन, परफॉर्मेंस नॉर्मल, भूगणितीय सर्वेक्षण, आपातकालीन सेवाएं, मोबाइल की स्थिति आधारित सेवाएं, उपग्रहों का कक्षा निर्धारण, महत्वपूर्ण संस्थानों में सामयिक सेवाएं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और ऐसे अनेक युक्ति अनुप्रयोग शामिल हैं। तृतीय चरण पूरी तरह उद्दिष्ट पथ का अनुकरण करता हुआ plus 13 minutes. यह वह अंतिम चरण है जो यान को 251 किलोमीटर तक ले जाएगा तथा गति 9.75 किलोमीटर प्रति सेकंड। यह गति NVS-1 उपग्रह को प्रदान करेगा जिससे वह उस कक्षा में अंतःक्षेपित होगा। परफॉर्मेंस नॉर्मल, वर्तमान में यान की सापेक्ष गति 7.1 किलोमीटर प्रति सेकंड तथा ऊंचाई 133 किलोमीटर। We have come 827 seconds past the launch time. The current relative velocity is 7.22 kilometers per second. The current altitude is 134 kilometers. The trajectory being followed by the launch vehicle is as per the prediction, very precise. उपग्रह का पूर्ण परिशुद्धता से कक्षा में स्थापित किया जाना बहुत आवश्यक होता है। इससे उपग्रह की लाइफ भी बढ़ती है और सेवाएं उपलब्ध कराने में